come to the next presentation, which is by Javed Yousuf Edhi Sahab. Javed Sahab is the CEO of NIFT and has been in the industry for such a long time. Perhaps I don't know if he's one of the most senior people who is in this audience in the IT field. And his presentation is going to be moderated by Iftikhar Arif. Iftikhar Arif is the General Manager, Information Technologies and Ecommerce for Muller and Phipps. You will stand here. Javed Sahab, आप और नहीं आप यहाँ पे कर दीजिए आप वहाँ Okay. Assalamu alaikum everyone. Good morning. Thank you, Kamran. You have actually set up a galaxy and collected all the stars of technological industry. I would like to say that I've been the part of CIO Summit for the last 3-4 years consecutively. And आदत के मुताबिक Kamran साहब is for you. मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया. So please put your hands together for the excellent arrangement of this CIO Summit. Okay, the tone has already been set up by our international and local moderators and speakers. I would like to share my expectation, and that you all are aware that the world is changing rapidly with the changes in technology. Even the word impossible says I am possible. Now, I must say that impossible does not exist. You can expect everything with the changes in technology in future. But today's leaders and CIOs need to prepare to face the challenge of technology and to make sure their organizations should adopt the frequent changes in technology timely, efficiently, and effectively to meet the customer changes. And with this, we have a very legendary and iconic personality, Javed Sahab. And today, we would like to discuss the technological impact in the industry and on the person as well. Sir, over to you. Thank you. I would appreciate if we can, Thank you very much. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, I would like to thank you, CIO Summit, Solution Corp, and Kamran for inviting me to this prestigious occasion. Thank you very much. And thank you very much for bearing me. I will try to be precise and succinct on a couple of slides, which I feel when the topic is given to me in the future. So I would like to take you back a little bit in a journey for a few minutes and then take the pace to that point. And that is my opinion. Maybe you can differ and we can have a question answer on it. Please. It's Okay. Small intro. This is, you don't have to waste time on it, but this is my company where I work. We are the processor of checks in Pakistan. So now we are in a digitalization format. Our company journey is now totally toward digitalization and image-based processing. So this is a fact. Another, we have internet payment gateway. So we have a two-flare of work in which we are working towards the merchant side, bank sides, and also handling customer journey on this. So we have also the digital e-trust with us. So we have three verticals on which we are working. So this is, I don't have to say anything about this, but it's just a mindset where everybody is aware, बार-बार repeat होता रहता है, लेकिन it's mind-boggling that it took TV and landline decades to penetrate into the million user, whereas ChatGPT took 5 days only. That's mind-boggling. If we go a little bit in past, इससे पहले हम थोड़ा चले जाते हैं. अगर हम पहले टाइम देखते हैं तो hundreds of years में होता है, centuries में होती थी चीज़ें. So if you see, in 1400 there was a problem
प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द सोल्यूशन, इज द नीड, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही आप नीड और इन्वेंशंस होती हैं. So you understand that in 1400 knowledge base is the printing was the key thing that happened at that time, and that transformed the knowledge transformation and knowledge impart, which continues for years and hundreds of years, followed by the changes in 1800 when the machine were invented, because at that time people want high speed production and ज़्यादा production करना चाहते थे. That has created. And in 1900 we have seen online. Everybody have seen in 70s it's ARPA, internet, online, email, then e-commerce, now where we are sitting. So what about 2000? Problem solving is the name of the game. आपने तीनों era में 400-500 साल में problem solve की है, और problem solve by technology, by industry, industrialization, and then by the online. So आपके जहन में क्या आता है? तो मेरे जहन में एक चीज़ आती है, वो ये है. This is one of the major problem in the market, and it needs to be addressed, because when we go digital, we are not present physically. We are not touching, we are not sensing the thing. Like when I say I give a cash to you, हमने decipher कर लिया banking industry में. If I give 1,000 rupees to someone or 100,000 rupees to someone, in any form, whether the check, whether credit card, whether limit, or in the form of the note, it is accepted as a 1,000 or 100,000 rupees. Not less than 1 rupee, not less, 1 rupee less, not 1 rupee high. So it's a trust which we have developed by the document which has been issued by the government, by gold, commodity. So these are the certain things which trade at the par values. Now, when you manufacture and you sell, then you have to prove that what you are giving them is full of trust, and we should be abundant of trust. So my belief, this era is going to be for the trusted companies now. If the companies have the right trust, because अब वो commodity की तरफ हम आ चुके हैं, अब हम money to commodity, normal जो metal पे नहीं रहे हैं, या cash to card या limits और bank changing hands पे नहीं रहे हैं. We are moving out of it, and now we are moving out from commodities against money, and then the commodity has to be provided by the trusted companies. So this is one of the area where the problem needs to be solved. और जो इस area में ज़्यादा काम करेगा, I believe उसकी काफ़ी growth आएगी. Now, the main topic हमारा यही था कि how do you see the future of the corporate world, which is very, very simple. Everybody knows about the technology trend. People have spoken about IoT, virtual reality, augmented reality, you name it, cloud computing. And when it comes to the change, it affects your work, it affects your education, health, transportation. Again, there are potential benefits and drawbacks, which both sides you have to see, and then you have to create the right balance. But the role of the leader has to be agile, number one. Number two, adaptable and collaborative and inclusive. Without this, survival नहीं होगा. And the Andrew said very rightly, companies की survival जो होती है, अब हम देखते थे मैनेजमेंट के कोर्सेज में पढ़ते हैं एस कर्व. सो मैंने एक थोड़ी सी एनालॉजी बनाने की कोशिश की है कि आप अपनी कंपनी को कहाँ लेके खड़े हैं, और अगर आपने मूव करना है तो क्या करना चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ द एनालॉजी. इट इज़ borrowed from the Accenture. Every business has its own S curve. S curve का सबको पता है, मैनेजमेंट के सब लोग होते हैं कि जी कहीं आपकी ग्रोथ स्लो होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कहीं तेज़ होती है, फिर इसके बाद एक स्टैगनेंट हो जाती है, और बिजनेस या तो डाई आउट हो जाता है या नेगेटिविटी आने जाती है. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं इसमें. सो अगर आप अपने आप को देखते हैं ऑरेंज कर्व पे, तो आप कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम डूइंग बेस्ट, आई एम इन अ BCG कर्व, कैश काओ, पैसे बन रहे हैं दबा के, सब कुछ सही है. बट बिलीव इट और नॉट, यू आर heading toward the end of the S curve, and it's started negative, although you'll not be able to see it because you might have a cash flow coming in, but it is getting negative. Because अगर आप उस business को with the passage of the time जो red में curve है उस level तक नहीं ले जाएंगे performance को,
तो you will not be able to sustain for next 10 years. अब तो 5 साल की बात होने लगी है जब 5 days में 1 million users create हो सकते हैं, mindset change हो सकता है. तो पहले 10 साल की बात होती थी, मैं समझता हूँ ये 4-5 साल में companies can wipe out if they don't adopt the right business model, they don't get the trusted entities and they don't have the right user experience for their customers, for their end users, whosoever are their end users. So मेरी नज़र में लीडर्स को, फ्यूचर लीडर्स को स्ट्राइव करना चाहिए टू वर्क टुवर्ड्स मूविंग देयर बिजनेस फ्रॉम द कंफर्ट जोन एस कर्व टू द नेक्स्ट लेवल एस कर्व, और उसके लिए उनको काम करना चाहिए. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एनी क्वेश्चन ऑन इट? Excellent. We have decided to make it more interactive. So if there is any question from your side, you can raise your hand. So in the meantime, I have a question that gone are the days when we were quoted the examples of apples and blackberry were just the fruits, mouse was an animal, and the custodian of web and net was the spider. Being the technological changes, we have changes the example as well. Now we are talking about the branchless banking. We are talking about the cashless payments, and we are not focusing on the leather ones, and now the wallets are become the virtuals. So, sir, you have a very diversified experience from NAD to NIFT. I've gone through your profile. What you see, where we are heading, and with these technologies and the pace and the passion, the expectations, where we can land it after 5 years? वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट इन तमाम फोरम पे पिछले 15-20 साल से हम हमेशा क्रॉस रोड्स पे होते हैं, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पे या तो बैंड वैगन मिस कर चुके होते हैं या क्रॉस रोड पे होते हैं. इसी तरह हर साल ये बातें होती रहेंगी. तो लेट्स फॉरगेट अबाउट द 5 ईयर. बट पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री ने, फाइनेंशियल सेक्टर ने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं. दैट्स ट्रू. दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड दे सॉल्व. बट अनफॉर्चुनेटली कैश इज स्टिल द किंग. Cash is anonymous. You can feel it, you can smell it, you can sense it. So most of the transactions are still happening in cash. इसके कुछ और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी हमारा जो पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल अकाउंट्स उस लेवल पे नहीं आई है. रेगुलेटर्स आर फ्लेक्सिबल. फिनटेक्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं पाकिस्तान में. यू हैव सीन के एवरी सेकंड फिनटेक इज़, एवरी सेकंड स्टार्टअप इज़ अ फिनटेक. सो हमारे यहाँ, बट दे नीड्स टू बी रेगुलेटेड. आपने पिछले दिनों देखा होगा कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए थे कि देयर वर सर्टेन लोन कंपनीज कमिंग इन, एंड व्हेन यू गो टू यूट्यूब यू गेट द, यू कैन गेट द मनी इन 5 minutes 10 minutes, एंड लोन्स आ रही थी. बट अगेन दीज वर द स्कैम्स, सो इट हैज़ टू बी हैंडल्ड. सो वी हैव अ वेरी गुड रेगुलेटर, SECP एज वेल एज स्टेट बैंक. दे आर मैनेजिंग द जर्नी इन अ कंट्रोल्ड वे. अदरवाइज वी मे हैव सीन more collapses and numbers of collapses in this industry. तो वो तो नहीं हुए हैं. बट नीड को सॉल्व करना इज़ द की थिंग. अगर कोई नीड है तो आज से 15-20 साल पहले एक नीड थी कि जी बिलों के लिए लाइन लगती थी, बिल पे करने के लिए लाइन लगती थी. अब लाइन नहीं लगती है. अब आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं. तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है. वो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. फूड डिलीवरी इज़ एग्जाम्पल, ग्रेट एग्जाम्पल. सो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी वो है जो आपके डे टू डे फैब्रिक में एम्बेड हो जाए. प्रोसेस वो होना चाहिए जो आपके डे टू डे फैब्रिक में एम्बेड हो जाए. आई यूज़ टू से दिस एग्जांपल कि एक टेक्नोलॉजी आज बनती है, कल कैसे वाइप होती है. आई यूज़ टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस फ्लाइट रेडार, फ्लाइट 24 टाइप, एंड वॉच एवरीथिंग ऑन टू इट, एंड कि कौन सी फ़्लाइट कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है, क्या हो रहा है. मैक्सिमम ये होता है, ज़्यादातर ये होता था कि कब जाना है, कितने बजे फ़्लाइट लैंड करेगी, कहीं डिले तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए होता था. गूगल ने उस प्रॉब्लम को विद इन सेकंड सॉल्व कर दिया. नाउ यू जस्ट पुट PK302, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. इट टेक्स फ्रॉम योर प्रीवियस से, बल्कि PK ही लिखो, और अगर आप रेगुलर 302 पे जा रहे हैं तो 302 के लिए फ़्लाइट स्टेटस, और वहाँ पे बता देगा किस गेट पे कितने बजे पहुँच रही है, कितना डिले है. सो थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड इट विल चेंज फॉर द कन्वीनियंस एंड द नीड. सो नीड हैज़ टू बी अंडरस्टूड. उस नीड को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. Anything non-technological can also become the game changer for you. Sir, perfect. आप ही की इस जवाब से, we all say that the world is changing, and when we say that the world is changing, the leadership style is also changing. So, sir, from a technological background to the heading the NIFT Corporation as a CEO,
एक क्वेश्चन जो आजकल चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो चेंजिंग. The diversification, the actual meaning of the diversification lies in the organizational setup as well. Banks are no more just a traditional bank. They are become the digital banking. Even the distributors and the schools are turned into a bank. So इस ventures के अंदर जो leadership style है और जो technological gurus हैं CIOs, उसमें के लिए आप क्या आपकी what's your suggestion and what is your input कि किस तरीके से इस चीज़ को adaptability को हम ensure करें? Lateral communication, agility, inclusivity and collaboration and confidence between the partners. ये अगर है, leadership flourish करेगी, organization flourish करेगी, product भी flourish करेगी. There is no rocket science in it. Perfect. So any other questions from the arena? Right, please. Is there a mic? So in the meantime, again, being ahead, one of the major concern is that the security. हम यूजली सिक्योरिटी को बहुत लीस्ट प्रायोरिटीज़ पे रखते हैं और या उस पर कम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. सो व्हाट्स योर टेक एज अ CEO ऑफ द कंपनी? देखें, अनफॉर्चुनेटली अभी भी इंडस्ट्री में पाकिस्तान की आईटी को ही अभी उतनी अहमियत नहीं दी गई, तो सिक्योरिटी तो बहुत दूसरे लेवल पे. विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर के पास जाएं और आईटी एक्सपेंस की बात करें तो उसको बहुत मुश्किल से समझ आता है. बेसिक वही प्रॉब्लम है कि जी अगर हम उसको सही तरीके से नहीं बताते हैं और उसको बेनिफिट रीप नहीं हो रहे हैं तो उसको डेफिनेटली वो होगा. बट व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी पार्ट इन अ फिनटेक एरिया एंड इन अ बैंकिंग एरिया इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह. वहाँ पे जो रेगुलेशंस और उन्होंने जो काम किया है, दिस शुड बी द वे, हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो. Then I see no problem in implementing or replicating whatever has been done in any other sector. Right. On a lighter note, I have encountered a question from a very senior fellow from my organization, and he asked me कि security के लिए क्या कर रहे हो? तो I said दुआ. तो पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में मैंने एक शेर कहा था मौके की मुनासबत से. इफ्तिखार आरिफ का शेर है, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसे सिक्योर कर दे. So it's very true that we are not going to invest heavily in the security part, and this is one of the area. So when we say that we are changing and adapting the international policies and international technologies, this area should have been addressed on a war footing basis. So we have a question there, sir, please. अस्सलाम वालेकुम सर. नेम? मेरा नाम शाकिर है और इत्तेफाक से मैं भी एक न्यू स्टार्टअप बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में हूँ. अच्छा, एक क्वेश्चन जो अभी जहन में आया डिस्कशन करते हुए, जो न्यू स्टार्टअप के पास डायरेक्शंस मिल रही होती हैं किस प्रोसेस में ऑटोमेट करना है बिज़नेस को, ये क्या करना है, जो सबसे मेजर एक इशू आता है जो ख़ासकर मैंने भी सेल्फ फेस किया है कि जो न्यू स्टार्टअप बिज़नेस को डिफरेंट बिट्स एंड पीसीज में डिपार्टमेंट्स में मिल जाते हैं डायरेक्शंस के लिए, बैंक्स या टेक्नोलॉजी या कोई फाइनेंशियल या कोई अदर एप्लीकेशन. वो जब क्राइसिस की सिचुएशन शुरू होती है तो उस वक्त में कोई एक कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं मिलता. फॉर एग्जांपल, अब इस करंट सिचुएशंस के अंदर जो कोई एक नया न्यू स्टार्टअप विद द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं, अब उसको या तो वो कॉस्ट के साथ कंसल्टेंट्स जनरली मिल रहे होते हैं जो कि एक कॉस्ट हायर करके जस्ट थियोरेटिकल किस्म की कुछ फीडबैक दे रहे होते हैं, ये प्रोसेस अडॉप्ट कर लें, ये वे अडॉप्ट कर लें, या तो फिर वो कुछ सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा रहे होते हैं और कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट टाइम को ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है, इंस्टेड ऑफ के वो जो न्यू स्टार्टअप की सपोर्ट के साथ कोई उसको सपोर्ट मिल के उसके स्टार्ट करने की सिचुएशन में आ रही हो. कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फोरम या कोई ऐसा डिस्कशन फोरम मेरे ख्याल में शायद होना चाहिए कि जो न्यू स्टार्टअप्स में सिर्फ ये कॉस्ट पेइंग सिचुएशंस के अलावा कि आप कोई कंसल्टेंट कंपनी या कोई ERP का सॉल्यूशंस बाय करने जाएंगे तो ही आपको अपना सिस्टम का सेटअप मिलेगा. इसके अलावा भी कोई डिटेल्स के साथ उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, वो अपने इश्यूज डिस्कस करते रहे और उसके कोई डिफरेंट फोरम्स के लोग एक दूसरे को हेल्प करते रहें विदाउट एनी जस्ट के कॉस्ट पे होगी तो उसको डायरेक्शंस मिलेंगी जनरली. थैंक यू. If you want to please. आपने बड़ा पेन पॉइंट बिल्कुल सही हाथ रखा है. पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में मुझे अभी तक स्टार्टअप की डेफिनेशन समझ नहीं आई.
अगर कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे कि व्हाट इज़ स्टार्टअप, एवरी पर्सन विद वन आइडिया इज़ अ स्टार्टअप, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टार्टअप होने के लिए जो उसके बेसिक्स हैं वो हमारे यहाँ तो कभी भी मैंने बहुत कम देखे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट्स द रीज़न वी आर नॉट हैविंग एनी यूनिकॉर्न्स इन आवर रीजन, इन आवर कंट्री, बिकॉज वही बात कि जी आपको जो है सर्विसेज मिल जाएंगी, कंसल्टेंसी मिल जाएगी, वो कहेगा मेरी ये प्रोडक्ट ले लो, मेरी ये प्रोडक्ट लगा दो, तो इसके साथ इस प्रोसेस को फिट कर देंगे, ये बहुत होता रहेगा, बिकॉज वी आर अनफॉर्चुनेटली बॉक्स मूविंग कंट्री, सोल्यूशन मूविंग कंट्री, एंड यूज़र ऑफ दिस। हम टीवी ले लेते हैं TSL का या सैमसंग का, वो इस्तेमाल करके खुश होते हैं उसके फीचर्स देख के कि वी आर पार्ट ऑफ इट। हम अभी उस चीज़ से काफ़ी पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग में और हम उन तमाम चीज़ों को अपने एम्बेड कर सकें और प्रोसेसेस और जिस तरह आपने बात की है उसको कर सकें। सो दैट्स अ गैप। पहला गैप तो एकेडमिया एंड इंडस्ट्री का, दूसरा गैप जो है वो जो ये स्टार्टअप्स और इनका और इंडस्ट्री का, कितने स्टार्टअप्स हैं मुझे नहीं पता कि किसको किस इंडस्ट्री ने इंक्यूबेट किया है, आई हैव नो आइडिया। मेरे ख्याल में बहुत से लोग और बैठे हैं, मे बी दे कैन पुट सम लाइट ऑन इट, बट दिस इज़ द पेन पॉइंट विच मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर सेइंग। बट उनके लिए फोरम्स हैं, पाकिस्तान फिनटेक एसोसिएशन हमने इस्टेब्लिश की हुई है, यू कैन कम, हाइव्स में है, and you can send the email on this Pakistan FinTech, and we can give you the consultant without any charge with the experience, so that they can help you out in it if it is suitable for you. I do agree with Javed साहब। आपका सेकंड पार्ट जो है कि देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और जो फोरम्स हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स की काउंसलिंग हो रही है, बट वन थिंग आई वुड से दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टार्टअप। एब्सोल्युटली राइट। हम स्टार्टअप को एज अ नीड देख रहे हैं या एज अ फंडिंग देख रहे हैं, ये बड़ी क्लियर डिमार्केशंस हैं। तो इसमें बहुत सारे फोरम्स हैं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं और बहुत दफ़ा इस चीज़ों पे बात हुई है। कमिंग बैक टू जावेद साहब, one question that we've been hearing since last several years. I have a different thing that I just wanted to know that pandemic is over, because हर दफ़ा जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पैंडमिक से रिलेट करते हैं और उसके बाद फिर हम उसी की चीज़ों पे चेंज, ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज़ के साथ बाइंड कर देते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ माइंड सेट विच वी नीड टू सी कि इफ़ द पैंडमिक इज़ ओवर we have to adopt the lesson learned things and going forward. जो lesson learned है वो ये है कि nobody is indispensable and everybody can be replaced easily with the short possible time. So if people think जो pandemic का lesson है कि I am indispensable और मेरे बगैर ये काम नहीं हो सकता, people have worked without opening the office and the systems are working. People have worked without IT team in the office and systems are working. People have worked without the sales force coming to the office and systems are working. Adaptation की बात है, expectations और acceptance की बात है. So pandemic का मुझे नहीं पता कि वो ओवर हो गई नहीं हो गई, अल्लाह खैर करे, क्योंकि ये ज़रा हेल्थ का और ऐसा मसला है जिसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता. Although the impacts जो उसने हमें सबक दिया है बड़े ओपन है और ओपन माइंड से हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, and this can be a good change and startup for us. Right. One more thing that you have actually set up an example कि कोई भी टेक्नोलॉजी का बंदा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर सकता है। सो सर आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करें, क्योंकि ये एक बैरियर है लीडर्स के दरमियान कि जो टेक्नोलॉजिकल CIOs हैं दैट वुड रिमेन अ CIOs फॉर एवर लाइफ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आई एम ब्लेस्ड, आई स्टार्टेड विद सिटी बैंक इन टेक्नोलॉजी, बट दे हैव गिवन मी द एक्सपोजर ऑफ ऑल एरिया। हमारे यहाँ लेटरल ट्रेनिंग होती थी, प्रोडक्शन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पाथ होता था, मुझे सब प्रोडक्ट का पता होता था, इवन कॉल सेंटर का मुझे 90s में पता होता था, CRM क्या होता है मुझे पता होता था, कस्टमर सर्विस क्या होता है मुझे पता होता था। फिर जो प्रोडक्ट डेवलप होती थी तो उसमें टेक्नोलॉजी की टीम को 100% इन्वॉल्व रखते थे। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी एक साइलो में बैठती है, फाइनेंस एक साइलो में बैठता है, ऑपरेशन एक साइलो में बैठता है और बिजनेस वाले एक साइलो में बैठते हैं। तो वो जो गैप है ना, वो लकीली मेरे कैरियर में जैसे एमनेट स्विच जब इस्टेब्लिश किया था, तो आई जस्ट वेंट टू माई मैनेजमेंट एंड सेड कि आई वांट टू इस्टेब्लिश दिस थिंग एंड वांट टू शेयर द asset we have of around 400 ATM with MCB at that time, and I want to open it for the banks. And at that time we got 18 banks connected on it, and we also served the bank which don't have the ATM controller. We issued the card to American Express banks and First Women Bank through our system.
एंड एट द इन 2000 और वो काम हो रहा था. सो तो बिजनेस एक्यूमेन किसी भी बंदे में हो सकता है, आईटी के में भी हो सकता है. मसला ये है कि शायद उसको चांस नहीं मिलता, मुझे चांस मिला. इन माई प्रीवियस जॉब ऑल्सो आई वॉज 110% पार्ट ऑफ ऑल द बिजनेस इनिशिएटिव्स. सो दैट इज़ द एक्यूमेन एंड ऑल्सो आई एम अ गुजराती, सो ब्लड में भी है. The question answer forum is open. If yes, please. We. Assalamu alaikum. My name is Omar Mania, and my question is about learning. As we know that the ability to learn or the way we are learning is completely changing. You know, kids today are learning more from the internet than they are actually learning from the traditional methodology. Even developed countries are now sort of not emphasizing so much on a university education as they used to in terms of career growth, etc. I think in Pakistan, where university education is actually reserved for a minority of people, do you see this trend catching up in Pakistan where self-learned people, people who are ambitious, people who are kids who are hungry to learn, will they be given the opportunities to thrive in Pakistan's economy? Because I think that's how it should be. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आंसर हो सकता है, बट मेरा आंसर आपको यह है कि एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम, नंबर 1, एंड देन बेसिक प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होगा तो फिर उसके बाद आपकी जो हायर एजुकेशन है वो डिवाइड हो जाती है. आई कैन गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. इन माय 90s आई वाज इन जर्मनी एंड वन ऑफ आवर जिसके वहाँ इनवाइट थे उसने मुझे अपने घर पे बुलाया एंड इंट्रोड्यूस मी to his 2 sons, and very proudly he said that he is scientist, he is getting into this, and other he is the industry में एक area में ये in charge है. So the 2 different directions has been accepted within the family. Means mindset. उसने कहा कि वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के लिए उसका एक पाथ है, उसको एक डिग्री लेनी है, उसने PhD करनी है, उसका ये ट्रैक है. और एक जो इंडस्ट्री में इंचार्ज है उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके लिए फोरमैनशिप, उसके बाद अप्रेंटिस, फिर इसके बाद उसके लिए हायर एजुकेशन की वो लेवल नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन की उसको ज़रूरत है. सो हमें अपने पाथ्स को क्लियर करना होगा. सिंगापुर में आज भी आप डिसाइड नहीं करते कि आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे. स्कूल डिसाइड करती है विद योर एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द 6, 7, 8 years of initial education. And then they let you know that you can get into this and you can get into this because they support the system. So learning और वो depend करता है कि आपका base क्या है. So base has to improve, otherwise it will be a problem for the country with a huge population like Pakistan. So we have to focus on it. Perfect. मैं थोड़ा सा I would like to add something. हमने अभी एक presentation देखी थी coming from Georgia. शौकत साहब उसको moderate कर रहे थे. You know the population of Georgia? It's a 3.73 million, and she's running actually a skill development program. 3.73 million तो कराची का मेरे ख्याल में आधा कराची जो है उससे ज़्यादा है. I am very much hopeful that there are number of skill development programs running in Pakistan, and if you just check the numbers, जो entrepreneurs और जो startups जितने पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं और जो एज ब्रैकेट्स हैं फ्रॉम 14 years to 25 years का, वो ये नंबर्स बताता है कि जी सेल्फ ग्रूमिंग एंड सेल्फ लर्निंग किस हद तक पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है. येस, देयर गॉन वाज अ डेज दैट स्कूल्स एब्सोल्युटली राइट कि जी स्कूल डिसाइड करता था या स्कूल बताता था कि जी हमारे पास सिर्फ इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए या डॉक्टर्स होना चाहिए. बट नाउ डेज वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट चेंज कि लोग अब साइबर सिक्योरिटीज़ की बातें कर रहे हैं. देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर एक्चुअली वांटेड टू गो इन दिस फील्ड एज वेल. सो देयर आर नंबर ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रनिंग. और जो बच्चे जिस तरीके से आजकल माइंडसेट लेके चल रहे हैं उसमें आप अभी एक नंबर देख रहे थे कि जी नेटफ्लिक्स का जो नंबर था, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू एज वेल सर, कि नेटफ्लिक्स ने कितना टाइम लिया ग्रो करने में, एंड चैट GPT वो कम इन जस्ट 5 days. सो सर ये जो ट्रेंड है ये बताता है कि हमारी जनरेशन किस हद तक अब टेक्नोलॉजी के साथ अटैच्ड है, इन्वॉल्व है, अवेयर है. तो ये 5 दिन का रिकॉर्ड भी क्या फ्यूचर में टूट जाएगा?
You never know. You never know. So this is just the kind of a thing. This is the kind of a speed which we call the transformation, the adaptability. So Right. one last question, if anyone has. I think she has question over there. Somebody give the mic to her. Can you please raise your hand? Okay, this. Assalamu alaikum. This is Fawzia Suhail. Walaikum salam. One question from you, Javed, is that you have mentioned that people are not moving towards the cashless payments. So what is the reason for that? In my opinion, because they are not confident about the cybersecurity of the banking sector, financial sector, the fintech. So what is the reason? How can we overcome this hurdle? देखिए हर लेवल पे कोशिशें हो रही हैं, रेगुलेशंस लाई जा रही हैं टू ओपन द अकाउंट एंड डिजिटल अकाउंट, और ट्रांजैक्शंस हमें जनरेट करनी पड़ेंगी, नीड जनरेट करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी. मैंने जैसे एग्जांपल दी थी कि आज मैं सारे बिल्स अपने जितने बिल्स हैं वो मैं पे करता हूँ ऑनलाइन. मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस रूम मस्ट बी पेइंग देयर बिल्स ऑनलाइन. ऑलराइट, अब ये कहें कि नहीं जी वो गांव वाला भी ऑनलाइन बिल पे करेगा, तो ये नहीं होगा. हांडी वाल पे जो बैठा हुआ है ना, जो वो पैसे भेजता है ना, तो वो इकट्ठे करके भेजता है. वहाँ जो बिजली के बिल आते हैं ना, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. हमारी जो प्रॉब्लम भी जो है वो हमें ग्रास रूट लेवल तक देखना चाहिए. आई वॉज सिटिंग इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस मीटिंग एंड वन ऑफ द ब्यूरोक्रेट हैज टोल्ड दिस एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस कि इसने कहा कि जी, हमने कहा बिलिंग पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन है तो आप इस डेट को कर दें, इस डेट को कर दें. तो इसने कहा नहीं, ये साइकिल्स नहीं ख़त्म करेंगे. मैंने फिर एक मरतब एम्फेसाइज़ किया कि यार एक बिल इतनी तारीख को आता है, एक बिल इतनी तारीख को आता है, ये ज़रा यूँ कर दें. मैं अपने एंगल से देख रहा था. उसने कहा यार आप उस एंगल से देखें जिस घर के अंदर आज आप एक साथ 50,000 रुपये के बिल मुंह पे मार दें उसको सुबह, वो उठ के काम भी नहीं कर सकेगा क्योंकि वो रोज़ कमाता है. उसको बिल्स भी जो हैं वो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उनको देने पड़ेंगे. सो वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बिल्स ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्टर. अब हम उसकी बात कर रहे हैं. आपने प्रॉब्लम सॉल्व की. मुझे बता दें, आप फ़ोन निकाल के सिवाय फ़ंड ट्रांसफ़र के या बिल पे के या कोई ना कोई थोड़े बहुत जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते होंगे, इसके अलावा क्या यूज़ करते हैं? कौन सा बिज़नेस केस है मेरे पास? मेरी नीड कहाँ आ रही है कि मुझे पैसा उसके अंदर रख के उसको यूज़ करना पड़े? मार्केट से आएगी. दिस अ कोलैबोरेशन बिटवीन द रिटेल विद द कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर. ये लोग जब तक इसके अंदर नहीं आएंगे कोलैबोरेटिव. अभी साइलो में बैंकिंग ने काम किया है, फुल फ्लेज काम किया है, हर चीज़ स्टैब्लिश कर दी है, एक सेक्टर यहाँ खड़ा हो गया है. अब ये रिटेल सेक्टर हैज़ टू राइज, टॉक विद द बैंकिंग सेक्टर, टर्म्स पे आना पड़ेगा, चाहे वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के थ्रू आएँ चाहे किसी भी लेवल पे आएँ. देन द थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग. अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को अडॉप्ट करना. तो कैश की अपनी अहमियत रहेगी. कैश दुनिया जहाँ में अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है. इवन टुडे आई वाज जस्ट हैविंग द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रांजैक्शन. सो क्रेडिट कार्ड की जो मेजर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऑन ई-कॉमर्स में होती हैं, जबकि डेबिट कार्ड पे वो ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं और अकाउंट्स में तो बहुत कम है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू गो एंड डू द COD. COD क्यों करते हैं लोग? COD अगेन मैंने जो एग्जांपल दी थी, ट्रस्ट. क्या कोई मुझे कह दे कि मैंने ये जो चीज़ ख़रीदी है ये 100% जेन्युइन है और ये मुझे पहले से ही पता हो तो मैं पैसे नहीं दे दूंगा. और अगर मुझे ये पता हो कि 100% जेन्युइन नहीं है और मैं जब मेरे पास ये चीज़ आएगी और अगर मैंने पहले पैसे दे दिए हैं तो मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ या मैं उस पर क्लेम कर सकता हूँ या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ विदाउट गेटिंग इनटू द मेजर हैसल. आई विल ऑप्ट फॉर दैट. जावेद साहब, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा. थिंग्स आर चेंजिंग. एज यू आर ऑल अवेयर दैट अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5 रिटेल बैंकिंग के लाइसेंस, डिजिटल रिटेल बैंकिंग लाइसेंस इशू किए हैं और वो पांचों के पांचों ट्रेडिशनल बैंक्स नहीं हैं. एंड 2 एरियाज़ ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें एक एग्रीकल्चर और एक रिटेलर्स, जहाँ सबसे ज़्यादा कैश जो है उसका फ्लोट होता है. एंड दे वांटेड टू चेंज द परसेप्शन, ये किस तरीके से कैशलेस को हम डिजिटाइज कर सकते हैं. तो द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग गुड मेजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बहुत सारी चीज़ें. फॉर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट लास्ट ईयर मुलर एंड फिप्स हैज़ कलेक्टेड 177 बिलियन रुपीज़ फ्रॉम द मार्केट. It's a total 23% of the market share. So you can easily imagine the quantum. But the good thing is that the peoples are realizing the cashless will come in future. So sir, with this yes, this is the last question, sir. We are running short of time.
Thank you very much for giving me one more question chance. आपका जो कैश का जो एक डिलेमा आपने शेयर किया है, उसके पीछे मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ, इफ़ यू अलाउ मी. प्लीज़. मेरा ताल्लुक़ ट्रैवल से है. ट्रैवल टेक्नोलॉजी में मैंने बहुत काम किया है, और आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारी ट्रैवल वेबसाइट्स आर इमर्जिंग आउट, और वो लेकिन द नंबर that are right now coming out are very low as compared to $24.5 billion market that Pakistan has it right now. And this is not out of the hip pocket number that I'm throwing out to you. So इसमें इतनी बड़ी large market में इतना छोटा digital foot step है, उसकी वजह ये है कि हम टिकट जो बाय करते हैं, सारे के सारे जो यहाँ बैठे हैं, एक 100-200 रुपए को चेक करके टिकट बाय करते हैं, और जो ट्रैवल सेल हो रहा है उसके अंदर मार्जिन्स बहुत लो हैं. और जब आपके जो डिजिटल जब आप क्लियरिंग पे आते हैं तो आपके परसेंटेजेस इतने हाई होते हैं कि मैं ये चाहूँगा कि मैं कैश दे के ले लूँ बजाय इसके कि मैं ऑनलाइन परचेज़ करूँ, क्योंकि ट्रैवल एजेंट खुद बेचारा शायद नहीं कमाता उसके अंदर. So my point here is, what are we doing as a NIFT or maybe Visa or banks to make that happen? डिजिटल इकोनॉमी को शिफ्ट करने के लिए, उसको चीपर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं टाइम अब शॉर्ट है, तो जस्ट वांटेड टू कंप्लीट द सेशन विद दिस शेयर. नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ साकी. With this note, thank you everyone. We are here. So in case of any question, thank you everyone.